We will continue with those commands from the draw toolbar, and we'll try to cover the remaining commands in the draw menu bar or draw commands. So let's start with the rectangle. Uh, if you remember, we were talking about a polygon. We draw different types of polygon using the polygon command. But the problem is such type of polygons are called regular polygons. Although we call rectangle is a polygon, but it is not a regular polygon. It is called irregular polygon because its all sides are not equal in length. So that's why if we draw a polygon with, if you draw a rectangle or a four-sided object with polygon, it will always be a square, not a rectangle. So for the rectangle, a separate command is available in CAD. And the next thing is, as you might have seen that while drawing different types of object, rectangle is the mostly used command. So a separate command is available for the rectangle. So if you want to activate a rectangle, you will just click over here, and it is asking us specify first corner. I will select first corner anywhere and second corner, and my rectangle will be drawn over here. There are three methods to draw a rectangle in CAD. The first one is if you know the starting point and the ending point, you can draw it just like we did in the limit X selection that we were defining lower left corner and upper right corner and rectangle over here. The next method is if you know the area of the rectangle and one side length, then you can draw a rectangle. Very simple. Let's say my area is 100 and I know this length is 50. Yeah, let's say one area is 150 units and one length is 10. So the other way will be 15 by default because we know that the area of the rectangle is xy equal to the area is a multiplication of length and width. And the next method is if you don't know area and you don't know the starting point and the ending point, but you only know the dimensions, so you can write anywhere with those dimensions, length and width, you can write. For the length, it always consider x value. For example, I'm giving length 5 and width 10, so it will be drawing a vertical uh, rectangle. The width will be greater than the length. So for length, it is always considering x value, and for y, it is always considering width value. So let's do it by all methods. The shortcut key for the rectangle is REC. Enter. It is asking me first point. I can give these values from the order pair from the crosshair. Let's say I'm giving 0, comma 0. Enter. For the next value, let's say I'm giving a value of 5, comma 9. You can see it is drawing a rectangle. Okay, I'm starting from 0, comma 0. This value is 5 and this is 9 and it is drawn a rectangle. So it is defined in between this point and this point. There is another method in rectangle command uh, which is called area method. So let me select, let's say this is the first point anywhere. You can give a value from the order pair or you can give a value from the keyboard or you can select from the screen. When you click over here, I have three methods now: area, dimensions, and rotation. So the first method we did over here, first corner point, second corner point. For the area method, I'm selecting the area A. It is asking me specify area of the rectangle. Let's say my area of rectangle is 150 units. Then it is asking me, do you have length or width? As I told you that if you have area, so you will need at least length or width. If you have length, just enter the length value, the width will be automatically calculated. And if you do not have the length value and you have width value, so select the width value and enter this value, it will be automatically selected. So let me use the length value. It is asking me rectangle length. Let's say I'm giving it 150.
सॉरी 150 नहीं देना चाहिए था, एज माई एरिया इज 150, तो वो उसको बहुत कम दे रहे हैं। रेक्टेंगल, सॉरी, रेक्टेंगल, स्टार्ट पॉइंट, एरिया 150, ठीक है, लेंथ, माई लेंथ इज हाउ मच, 15 है, ठीक है, विड्थ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है एंड इट इज ड्राइंग द रेक्टेंगल। अच्छा, as you saw that I give the value 15, if you give it minus 15, this will go in minus x direction from this point, ठीक है, तो you can also define the direction. If you are defining it by length, so length means x value. If you are giving plus value, it will be going on right direction from the starting point, and if you are giving negative value, it will be going on the negative direction. But if you are defining it by width, so similarly you will be defining plus value for positive axis and minus value for negative y axis. The next method in rectangle is dimension. So this is a very simplest method. I will select D, and it is asking me specify length. So let's say my length is 6 and my width is 12. You will see a rectangle is drawn, the y value is 12, the x value is the x value, and you can place it anywhere. मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ड्रा हो जाता है। X value is 12, the y, oh, 6, the y value is 12, because I have selected a length as a 12, is always considered length in x direction. Let's see what we can do in rectangle, um, further in rectangle. So let me select another point starting from here. It is an option rotation R. It is for the rectangles. If you want to give it a rotation at a certain angle, you can see that we are drawing all the rectangles horizontal and vertical. All the lines are only horizontal and vertical. If you want to draw a rectangle, or rotate a rectangle, or if you want to draw a rotated rectangle at specified angle, we can do it. Rectangle, start point, okay, rotation. Let's say I want to write 45 degree. Now you can see your rectangle is drawn at 45 degree. Okay, there is very interesting point that it is measuring all the dimensions from the x-axis. It is measuring the, if I draw a line over here, you will see that why it is measuring from the x-axis. मैं यहाँ पे अगर draw करूँ ना point, okay, let me show you that it is measuring the angle from here. You can see it is 45 degree. Now, by this method, you can draw a rotated rectangle. After that, any rectangle I draw with this rectangle command, it will be rotated. You will see it. But I have entered angle 45. You can change the angle. If you want to change it, select any point, rotation angle, let's say 23. It will drawing the rectangle at angle 23. But it will be always, by default, it will be always measuring from x-axis. This is the x-axis, and it will be going counterclockwise. You should keep in mind that by default, the CAD is measuring lines or angular objects counted from x-axis, positive x-axis, and going on the counterclockwise direction. We can change this setting by going to units and just clicking one option. It will be counting in counterclockwise. So if you are clear with these three methods of the rectangle, then we can discuss this angular changing, angular directions, that why it is measuring from x-axis. I want to show you these things. If you have any problem in this uh, uh, rectangle method, in these rectangle methods, you can ask me. Okay, it means you have no problem. Hello. यस सर, क्लियर है ये वाले। Yes, sir. यार एक बात ये है कि इस क्लास में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है और ओनली 18% आर ऑनलाइन। वाई, वजह क्या है? नहीं पता सर। रजिस्टर स्टूडेंट ही है सर हमारे पास।
ये सही तरीका नहीं है। आई विल रिपोर्ट इट टू द चेयरमैन। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ये मजाक बना रखा है इन्होंने। ये अगर आपका कोई ग्रुप में है उनको बता दे कि सर कह रहे कि एवरी वन मस्ट बी प्रेजेंट। अगर आप रिकॉर्डिंग से सीख सकते तो फिर मुझे हर क्लास में पढ़ाने की क्या जरूरत है? मैं तो रिकॉर्डिंग शेयर करता जाऊंगा, फिर आप देखते जाएं। सर हमने ग्रुप में मैसेज भी किए थे लेकिन किसी ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, स्पेशली जो री रजिस्टर है उनको स्पेशली बता दे कि सर मैं ग्रुप पे भी मैसेज कर दूंगा कि भाई विदाउट जो है क्लास अटेंडेंस आपका एग्जाम वगैरह में नहीं लूंगा। इट इज़ नॉट लाइक द अदर कोर्स। कैड यहाँ पे आप इंटरेक्टिव सेशन में नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? Okay, so let's talk about why this, because a question arises that why it is measuring from x-axis only. For example, I'm giving a line command starting from this point, and I'm asking the CAD, or I'm giving a value, let's say 30 at the angle of, ठीक है, या एट द रेट डाल लेता हूँ ताकि ये उधर ही ऐसे शुरू करे, एट द रेट 30 at the angle of, let's say, 60. What it is doing, it is measuring the angle from this axis and going in this direction. Okay? If I give it minus 60, it will do it again. But at this time, it will be going on the opposite direction. Okay? At the rate, let's say 80 at the angle of minus 30. Sorry, at the rate मैंने हालत डाला था. At the rate 80 at the angle of minus 30. You can see a line is drawn, but it is measuring from the positive x-axis and going in the opposite direction of the default direction because I have entered a value negative for the angle. Okay. If you want to change by default these settings, and if you want to do not measure from the x-axis, and if you want to measure from any angle, whether it is y-axis, um, um, 180 axis or 270 axis, or you want to measure from any angle, angular line, you can do it. For that, we will go to units. If you remember, we left this thing in the units, this portion. I told you we will discuss about this later. So if I click this thing, the CAD will be measuring all the dimensions in the counterclockwise direction. When you are giving up a default value, it will be measuring from here, not from in this clockwise direction. Still, it will be measuring from the counter x-axis, positive x-axis, but will be going in the counterclockwise. Just look at this. I'm entering this command, line, starting from this point, and I'm saying that 30 at the angle of 60. At the rate डाल लेता हूँ ताकि ये उधर से ले ले। ये हो गया। Just see, क्यों नीचे की तरफ आ रहे हैं? Because I have changed my control now. I have changed the clockwise, by default it was anti-clockwise, but I have changed it to clockwise, so now it is measuring in the clockwise direction. Similarly, you can change this reference axis. We call it a reference axis. We can change it to anyone. Let's see. I'm going to units again, and if you check this clockwise, it will be measuring the angle from your reference axis in the clockwise direction. Let me uncheck this. Now let's see the directions. The direction means you have set your reference angle, base angle to 0. If I check north or 180 degree, let's say I'm selecting north or 190 degree, this is comparing these things, this UCS with the world coordinate system. We normally call it north, south, east, west. So we consider north at 90 degree. So this is just comparing it with the world coordinate system. If I change the control from the base angle to 90 angle, and when I give the same command, so what it will do, it will measure not from here, it will now measure from here. So we are changing our base angle. Let me do it. Okay, line. Let's say this is a starting point. Okay, I'm giving at the rate 30 at the angle of 60. You can see I'm entering the same command as I did for
the other two, but it is measuring only, it is measuring from here. Why? Because we have changed our control now from base angle. Similarly, you can change it to any angle. Well, you can change it to some specified angle as well. It's up to you. We normally keep it at zero angle because we are used to with the measuring from the x-axis, and you can change it from here, clockwise, anti-clockwise. That depends upon your drawing and your choice and your available units. Is this clear? Now, okay, why it is measuring all the dimensions, angular dimension from x-axis and going in the counterclockwise. So it is not necessarily to be done like this. It can change these properties. Yes, sir. Okay. Now let's come back to the rectangle. We discussed about these three methods of the rectangle. We have still rotation. So if I want to remove rotation R, I will give value equal to 0. It will be drawing the rectangle like this. But if you look at the rectangle, it is a very simple rectangle, but drawn with the four lines. If you want to change the properties of this rectangle, if you want to give it an inherited properties, which will be available in all the rectangles with this this current drawing, you can change it. You can chamfer its edges, you can fillet its edges, you can give a line width to the line, you can give it an elevation, or you can give it a thickness. So let's talk about all these commands one by one. When you go to the end rectangle command and do not select any first point, we have some options inside the rectangle command. We have chamfer, we have elevation, we have fillet, thickness, and width. So you can, before selecting any starting point, if you want to change the properties of the rectangle that you are drawing, you can do it. Let me do it by chamfering. Or let me do it by fillet. Fillet is simplest one. Fillet, F, enter correct. It is asking me specified fillet radius. Let's say fillet radius is 3. Enter. Now you can draw rectangle by any method. Sorry, this is very small as compared to the fillet radius. Sorry. Hmm. Rectangle, fillet, still 380. Okay. What does this fillet mean? It is basically rounding the edges at particular radius, which is 3. You can change. Let me change the fillet radius to 1. You more easily understandable. सर ये बता दीजिए कैसे ड्रा किए? ये मैं कर रहा हूँ ना मैं डियर, आपके सामने रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ. ठीक है, मैं सिर्फ एक वैल्यू चेंज कर रहा हूँ. Let's look at again. Rectangle. I'm just going to, before selecting any point, I'm just going to select option F and giving a value. Let's say I'm giving a value of 2. Okay, and thus I'm just drawing a rectangle over here. 1 point, second point, and the methods remain the same. If you want to drive by area, if you want to drive by dimensions, or by specifying its start point, end point, you can do it by all these methods. But this will be the property of the rectangle. It will have all the edges rounded at a particular radius, which you have defined as a fillet radius. Is that clear? सर ये एक बार दोबारा Yes. कर दें सर. My dear, it is not that difficult. It's very simple. You can see this rectangle. Its edges are sharp. If you want to cut it at particular radius, why we do filleting? सर असल में मैंने इधर कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा सर. यार आप करने को छोड़े ना, पहले समझे फिर करें ना. आप क्विकली नहीं फॉलो कर सकते. जब दोबारा आप वीडियो को देखेंगे तो आप उसको कर सकेंगे. मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो काइंडली उस टाइम पे आप अपने कुछ नोट्स बनाते जाए और अपने लिए रिजर्व करें, फिर बाद में इसको देखें. ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको डायरेक्ट क्विकली फॉलो नहीं कर सकेंगे. ओके सर. और इसमें ये इशू होगा आपका कि शायद आपने जो रेक्टेंगल आप ड्रा करें वो छोटा और आपका फिलेट रेडियस बहुत बड़ा हो, एक, या दूसरी रीजन ये हो सकती है आपने फिलेट रेडियस बहुत कम दिया हुआ है और आपका रेक्टेंगल बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो उसमें शो नहीं होगा.
ये दो रीजन हो सकती है. Okay, sir. Why we are filleting the edges, sharp edges? In engineering design, we want to reduce the stress concentration. So you might have studied in solid mechanics that when we have sharp edges, the stress is concentrated over there and the failure chances are greater over there. So we want to reduce those chances. Similarly, for safety purposes, let's say you are designing a mobile phone, you might have seen that all the edges are rounded. Why? Because if you have sharp edges, it have more chances of injury or more chances of it's not safe for the use as compared to round edges. So we normally reduce the chances of injury or reduce the stress concentration using the chamfer of fillet. So it has many advantages. We are applying fillet and edges or chamfering. So by filleting, we are just rounding its edges. Okay, I'm doing again rectangle. Before going to end selection any point, I'm going to fillet. It is asking me specify fillet radius. Let's say it is 5 now. Now you see, I'm drawing a rectangle and it is doing it like this one. If I do it a small one, it is not showing the fillet because my dimensions are very very small as compared to the fillet. But as long as I'm increasing it, it will start when this length increases from the total fillet radius, it will start showing. Still, it is not showing me. But when I have increased my dimensions of the rectangle, it is showing me. Because if you have 2 by 3 rectangle and you want to fillet it by 5 radius, it is not possible. It is not doable. It will not do it. So you all should always keep in mind that a fillet radius should be reasonable, which is coming, which can be drawn on those edges. Similarly for the chamfer as well. Rectangle, chamfer, so you see chamfer radius is 2, the next chamfer radius is let's say again 2. And when I draw a rectangle, its all edges will be cut at angle. How it is doing? It is counting 2 from, cutting 2 from this side, cutting 2 from this side and joining this. And you can see all the edges are uniform. Okay, so if you need such type of rectangles which are chamfered at specified angle or specified length, you just change the properties and draw any rectangle. It will be drawn with the same properties. It has no limit on the number of the rectangles. How many rectangles do you draw? It will be drawing all. Similarly, there is another option inside the rectangle command. Width. We can change the line width as we did in the simple line properties or in polyline that we were changing the width uniform and non-uniform. Over here we can change the overall uniform width of the line. So if I go to the width and I give it let's say 2 value, and if I draw a rectangle over here, you will see that the width is changed now. It's still filleted, it's still chamfer, and the width is different from these two. If you want to reduce the chamfer, go to the chamfer, start chamfer, end chamfer, and now you can draw without chamfer. If you want to reduce the width, go back, width 0, it will be drawn a very simple rectangle. There is another option which is called thickness. Thickness and elevations are normally used in 3D. Thickness is giving it a third dimension, and elevation is basically you are drawing different rectangles away from each other at a specified elevation or distance. It is just like you have a two-story building and you want to draw one rectangle on ground floor and next rectangle on the first floor. So the distance between ground floor and first floor is called elevation. These rectangles will be not drawn on the same plane. These will be drawn on the plane separated from each other at a specified distance, which is called elevation. So and as we can see that um, um, if I change the direction from here, the plane from top to
front view, all the objects will be looking like lines because all these are drawn in a XY plane only. Okay, so in CAD top view, all anything we draw by default is drawn in the CAD top view. But if I change it to the CAD front view, we will have only one line because these are 2D objects, not 3D objects. I can see it from the this orbit as well. ठीक है, if you do not have orbit आप उसको insert कर ले, आप उससे देख ले. ठीक हो गया जनाब. So this is when we draw something by default, it will be showing like the top view. Okay. Acha. But if I draw object at elevation, it will be not on the same plane. As you can see, all these objects are on only one plane. That's why these are showing us just like a single line. So let me go back to the top plane and draw a rectangle. Okay. Let's give it an elevation. First thickness, then elevation thickness. Okay. Let's the thickness value is 20. Okay. I'm drawing a rectangle over here. I'm drawing it over here. Okay. Now let's see where is this rectangle drawn. You can see it is drawn over here, but with the third dimension. You can see it from here. It is drawn just like a box. You can see. Right, let me move it from here so that you make it clear image of this. Orbit. You can see it. It's a rectangle, but it's not a rectangle right now. It's a box-like object. If I change its view and visual style from 2D to 3D, you will see that we have a surface model over here. You can see it is not a 3D object, it is a surface model with the क्या नाम है with third direction. ठीक है, आइसोमेट्रिक में आपको सही नजर आ जाएगा. इस थर्ड डायमेंशन में इसका वेट नजर आ रहा है. ठीक हो गया. So that is just like a solid object. Not, it is not now. You can see that we have third dimension over here. Z में भी इसका show किया. This is due to thickness. Similarly, if you want to reduce the thickness, let's say rectangle thickness, make it 0. Now I can give it. Let me draw a simple rectangle over here, and next one is I'm drawing with elevation E, and let's say elevation is 30 value. और मैं इसके अंदर ही ड्रा कर रहा हूँ. If you look at this object, this rectangle is seems that it is drawn. These two are drawn on the same plane, but these are not drawn on the same plane. If I go to front view again, you can see this rectangle is drawn somewhere above this rectangle. Why? Because I have given a value of elevation. So such type of commands are used when we are converting 2D into 3D, or when we are drawing different types of objects to be converted into 3D using the loft command, in which we use loft is a command in 3D with the help of which we can join the cross sections located at different elevation to be converted into 3D. ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह जब 3D पढ़ेंगे करेंगे. But you should keep in mind that what is the meaning of elevation and thickness in this rectangle command. So with this, we are done with our rectangle command. If you have any problem, you can ask me. If you do not have any question, so we can move forward and discuss about some other commands. Okay, next command is called spline. Spline is a special type of line. It is just like a mathematical curve. You might have heard about in statistics and mathematics about. You might have heard about the curve fitting, that we are drawing such a curve polynomial 3D, 2 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree, 5 degree, 10 degree lines, and we have some points and we want to cover those points. Sometimes we want to pass the point exactly to the points, and sometimes we want to give it some
a tolerance that okay you can pass not or you can pass on the surroundings of those points, but that must be in limits. We can do it using spline command, and it is normally drawing the objects. It is normally drawing the objects which cannot be drawn with some other commands. ठीक है? मतलब ये कि it is drawing only those, it can draw those last curved lines, smooth curved lines which cannot be drawn with the circular and elliptical arcs. It is some special type of arc, and for in manual drawing we are using French curve for such type of objects. French curve, you might have seen the French curve that we have a zigzag type of uh, 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 a unique type of curve used for drawing different types of lines which cannot be drawn, which are curved but which cannot be drawn with the um, circular or elliptical arcs. So I have drawn some points. Let me change the points uh, shape. Let's say it's 99. Sorry. Let me change it to some specific value so that I might see. Let's say I have these points and I want to start a curve from here going like this one, and I want to join these 2 points with the help of a curve. If I want to do it with a circle, it will be very difficult for the arc to pass all these points. Okay? Because it is specified radius in overhead, the radius is non-uniform. If you want to do it, we can do it using spline command. SPL is the shortcut key. SPL is the shortcut. It has some settings like method and knots, objects. We will talk about it after a while. But if we go to the method over here, we have two methods, um, fit and CV. CV is for the control vertices and fit is for the fit. So we are using the fit method over here. I will show you the difference. Let's say I'm starting from here. Next point, next point. You can see I have drawn a curve which is very smooth passing through all the points. This is done with the fit curve. We have fitted our curve passing to different types of points. Okay? This was a curve which is exactly passing to the points. Let me draw a circle over here just for the reference. Okay, और तो मतलब है कि मैं 5 से ज़्यादा दूंगा, it will be okay. Okay. So you can see that I have drawn a curve passing to all these points, and it is exactly passing to the points. And you can see this such type of curves can only be drawn with the self spline. This type of curves are used in aeroplanes, aircrafts, or uh, mm, uh, car body designs, because we have different types of coordinates and we just passed it with the polyline and it drives. So you might have seen the car, the sports car curves. It is not circular, neither elliptical. These are some special types of curves. So we can use this type of command for them, for those objects. This was done with a close fit, which means there was zero tolerance. By zero tolerance, we mean that we were not allowing the line, the spline to deviate from these points which I have selected. Okay? But if I want to change, if I want to give it a tolerance, I can do it. Like when I select first point, it has option tolerance L. Why L is in capital, that's why we will type L. You can see the tolerance by default value was 0. If I give it a value of 2, let's say, okay, and if I click over here, it is going. If it has more freedom over here now. It can go away
are inside of the line, but the limit is 2 value. ठीक है, मैं इसको इंटर करता हूँ, you will see. You see, in the, let me change the color of this line, which is over here. Sorry, अभी मैंने draw किया, let me change its color, and you'll be able to understand. You can see the line with the yellow. The line which is drawn with the क्या नाम है normal color जो है bilayer या white color है, it is exactly passing to the point, but this line is not passing to this is drawn at a distance. What is the distance? It has a limit, it has an option, it is freedom that you can draw it 2 degree or 2 units away from this point, because I have entered a tolerance value 2. If you increase the tolerance value, let me draw it, increase the tolerance value, it will be drawing it with some more freedom. Okay? This is used in let's say tolerance value is 5. Now you see, I'm again selecting the same points, but my line will be different. You have more freedom to deviate from the exact point. ठीक है, so इसी तरीके से हम जो है exactly passing to the objects, या with the tolerance value we can define our spline passing to different types of points. Is this clear? There is another method in spline that, sorry, it is called, if you go to the method, it is called CV, control vertices. In this method, we are select, these are our vertices, and the object is drawn according to these vertices. It is giving it more freedom. With the help of curve fitting, we can draw up to polynomial lines, but with the help, with this control vertices, we can draw a line up to 10 degree of freedom. Very curved. You can see a very curved object. Okay, when you click over here, it will have its vertices. This is the vertex, and with the help of these vertices, this line is adjusted, and it has more degree of freedom. Sorry, more polynomial degree, not degree of freedom. It is more polynomial degree, and we can change this degree as well. अगर मैं दोबारा spline में चला जाऊँ ना, so if I go to the method में मैं CV select करता हूँ. In CV it has degree over here, degree. Currently it is at 3. If you can change it to 10, you can give it to 10 degree of freedom. Not degree of freedom, sorry, 10 degree of polynomial of draw कर सकते. You see the object is drawn with the vertices. It has its own vertices. So we also draw spline with the vertices. These types of options are not available in Office 2007. These are only available in the latest versions, like 17, 18, 16, etc. This was about spline, that if we have a special type of curve, you want to draw it passing to different types of points, you just if you have special types of line to be drawn passing to different types of points, so you can use this method very easily. I hope it is clear to all of you. If you have still any problem, you can ask me. The next command is called revision cloud. Revision cloud is a special type of command which is used to show importance of a particular portion of the drawing, or to bring attention of the reader to the drawing. How? Let's see, we have an object like this one. Let's say we have a hole over here, or we have a, let's say we have a rectangle over here, and we have this small hole. And I want the reader that this hole is very important, don't miss this hole. So what we do, we go to the revision cloud. We can do it from here.
there is revision cloud. Okay, and we just select it and we draw a cloud type object around the list. ठीक है, मैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प मेथड किया हूँ. Do it again. Sorry. This cloud is a shortcut key. Let's say when you come to the initial position, it will be over here. This thing tells that this is not the part of the drag, but this is telling the reader that there is something important to read it. You can see over here we have explanation. ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है विच इज रिव्यू, ये कुछ ऑप्शन जिसमें है, तो वो रीडर के क्या करता है, अटेंशन उसकी तरफ लेके आता है कि लेट्स से यू हैव टू, इम्पॉर्टेंट का मतलब है कि यू हैव टू रिव्यू दिस पोर्शन और इट इज रिव्यूड. ठीक है, वी कैन change this arc length. We have options. We can change this arc length. We can change this curve. This is a freehand curve. We can change it to rectangular. We can change it to polynomial, polygonal. We can change it to anyone. Just go to the riff cloud, and we have some options like if you want to change the arc length, the minimum arc length is let's say 1, the maximum arc length is let's say 3. Now it will be drawing with the same riff cloud, but the arc length will be different. The minimum will be 1, the maximum will be 3. The 3 or 5 which I have selected. ठीक हो गया? So riff cloud. From where you will get the information, you can see it from here. That when you go to the riff cloud command, just above the riff cloud command, it is telling you that your maximum minimum length is 1, your maximum length is arc length is 3, your style is normal, and your type is freehand. If I change it to rectangular, so it is changing it to rectangular. ठीक है, rectangular में ये होगा, you will just trying a rectangular type for riff cloud. In polygonal क्या होगा, piece for polygonal. ठीक है, उसमें होगा the number of lines आप खुद डिफाइन, 3 पॉइंट सेलेक्ट करते हो 3 हो जाएगा, 4 सेलेक्ट करते हो वो रेक्टेंगुलर या 4 साइडेड हो जाएगा, अगर मैं 5 सेलेक्ट करता हूँ वो 5 साइडेड हो जाएगा, अगर मैं 6 सेलेक्ट करता हूँ वो 6 साइडेड हो जाएगा. ठीक है, और एंटर कर ले वो बन जाएगा. सिमिलरली अगर आप वापस फ्री हैंड में आना चाहते हो तो फ्री एंटर कर लो, आपको यहाँ से पता चल रहा है कि भाई ये क्या ऑप्शन, फ्री हैंड कर लो और इस तरह जब तक आप क्लोज पॉइंट तक नहीं आओगे ये बनता जाएगा. इसमें एक और ऑप्शन भी है स्टाइल एस. इस पे टू ऑफ द currently we are using a normal one. If you want to change the calligraphic C, in calligraphic one you can see the thing is drawn with a calligraphic rectangle. क्या नाम है, it's a bit different from this one. It's drawn just like with the more calligraphy as compared to the normal line, so we can change its style. If I go back to the riff cloud, we have now freehand, we are using the calligraphic style, we have length, maximum arc length 3, minimum arc length 1. If you are okay with this, just go with this. Otherwise, you can change any object, you can change any of the property over here. Okay, there is another option that we can convert any object into a riff cloud. How? Sorry. We can convert any object into riff cloud. It is an option object O. I want to select this object, इसको मैं select करता हूँ, और do you want to reverse, देखिए it has been converted to riff cloud with calligraphy. इसमें डायरेक्शन देखिए इनर साइड पे कर्व है, अगर मैं इसको चेंज करूँ, यस डायरेक्शन चेंज करूँ, कर्व की डायरेक्शन जो है वो दूसरी डायरेक्शन समझ आ रही है. So we can draw such type of objects in the drawing to bring attention of the readers to this portion, a particular portion surrounded by a riff cloud. It tells the reader that this part is important, it has been reviewed, it has been given more attention, it
इट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्राइंग। इस तरह की हम इंफॉर्मेशन इस सिर्फ क्लाउड से देते हैं, बट दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay. Next command is called text command. If you want to draw or write something, we just do it using the text command. So T or NT is the shortcut key for text. It is asking us specify first corner first. Okay. Um, uh, and you just define a box over here. Okay. And now we are being asked to write something over here. You can draw anything over here. Okay. Let's say Google is a search engine. Okay. Uh, you can reduce this thing, you can increase this thing, it is up to you। ठीक हो गया जनाब? ठीक है। देखिए दिस इज जस्ट लाइक योर क्या नाम है, वर्ड फाइल है। इस तरह वर्ड में कहता है, हमने यहाँ पे ड्रा किया है ना, ठीक है। इस पर क्लिक कर लें, डबल क्लिक कर लें, और इस चीज़ पर ऊपर डबल क्लिक कर लें। यहाँ पे देखिए आप लेफ्ट से शुरू करते हो, टैब कहाँ कितना देना चाहते हो, नहीं देना चाहते। आप इसकी जो है पैराग्राफ अलाइनमेंट आप कहाँ पे करना चाहते हो, लेफ्ट में करना चाहते हो, यू विल सी। ठीक है, सेंटर पे तो ये सेंटर से शुरू होगा, राइट पे करना चाहते हो राइट से शुरू होगा, जस्टिफाइड करना चाहते हो डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हम नॉर्मली वर्ड में करते हैं। ठीक है, लाइन्स पैराग्राफ स्पेसिंग, आप दूसरा पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग करना चाहते हो, लाइन को इंडेंट करना चाहते हो, नहीं कर, ऑल दीज थिंग्स आर डन इन नॉर्मल क्या नाम है उसमें होता है, हम इसको करते हैं। ठीक है, सिमिलरली दिस इज अबाउट पैराग्राफ, सॉरी गूगल नहीं है। इस तरह टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हो। इसको सेलेक्ट कर ले, इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है कि आप कलर चेंज करना चाहते हो, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करो इस ऑब्जेक्ट को, इसको कलर को चेंज कर। ठीक है, टेक्स्ट का सेपरेट कलर भी चेंज हो सकता है। लेट में चेक के वो कहाँ से होगा। ठीक है, इसमें अगर आप आ जाए, स्पेलिंग वगैरह हो सकती है। नहीं, हाईलाइट कलर भी नहीं चाहिए, इंपोर्ट टेक्स्ट भी नहीं चाहिए, सिंबल्स तो यहाँ से हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, पैराग्राफ अलाइनमेंट जो हो गया, पैराग्राफ बुलेट्स एंड लिस्ट नहीं चाहिए, कॉलम्स 2 3 चाहिए, 1 चाहिए। I'm looking for something important over here. ओके, आप इसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, डोंट वांट इंपोर्ट। यहाँ से तो मैं चेंज कर सकता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, देखिए दिस इज माय फर्स्ट कॉर्नर, नेक्स्ट कॉर्नर, oh sorry, text first corner. Before selecting next corner, I can change the text height from here, I can justify it, I can increase the line spacing, I can give it a rotation, I can change style of the text, I can change width of the text. So if you go to the height, okay, its value is 2, if I give it to 1, you will see the height of the text is increasing. If you don't want to make it 1, ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं और उसको खत्म कर लेते हैं। टेक्स्ट हाइट की बात हो रही, हाइट। ठीक है, लेट्स से इट इज 0.5, so it will be reduced to 0.5. जस्टिफाई का मतलब ये है कि where you want to place your text, this is a box। ठीक है, so whether it will be currently if you are writing something, it will be starting from here going to the left, to the right and down. We call it top, this corner is called top left। ठीक है, if you go to justify, we have some options,
TL, TC, TR, ML, MC, MR. T is for top, L is for length, left. Top left, top center, top right. Middle length, middle center, middle right. ठीक है, ये कहाँ से मैं पता चल, लेट्स से दिस रेक्टेंगल, एक बॉक्स होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स ये वाला, इसको ये कहते हैं टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, bottom center, bottom right. So any option you select, it will be spreading या originating the text from there. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख ले टेक्स्ट, मैं इसी को यूज करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, और मैं जस्टिफाई में जाता हूँ, इसको कहता हूँ क्या करूँ, मिडल लेंथ से करो, एम एल, ये एग्जैक्टली इस सेंटर से शुरू करेगा। लेट्स से ये when I'm typing something, it is starting exactly from the middle left, that middle length, middle left, ऊपर भी जा रहा है उस बॉक्स के अंदर और नीचे भी आ रहा है, you can see it। ठीक है, ऊपर भी जा रहा था, नीचे भी आ रहा था, तो दिस वाज अबाउट द जस्टिफिकेशन ऑफ द टेक्स्ट, वो हम जस्टिफाई कर रहे थे। इज दिस क्लियर कि नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन है? Again, empty for the text, first corner. Do we have some rotation, or अगर आप rotation देना चाहते हो, let's say this is rotated at 20 degree, your box जो है आपका 20 degree पे rotate होगा, और anything you draw, text will be thrown at rotation। इस तरह के और भी आप ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, we do not have standard over here right now, तो वो हम यहाँ से नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? तो इस तरह हम टेक्स्ट लिख सकते हैं कैड में अगर हमने कोई चीज लिखना हो। ओके सर। नेक्स्ट इज कॉल्ड बाउंड्री एंड टेबल। चलिए टेबल की बात करते हैं। वी कैन इंसर्ट अ टेबल जस्ट लाइक टेक्स्ट। सो टेबल के लिए TABLE, टेबल इज अ शॉर्टकट की। इसका अपने एक इंसर्ट टेबल ऑप्शन होता है, या यहाँ से आप आ जाए टेबल सेलेक्ट करें, ये विंडो ओपन हो जाएगा, या आप ड्रा मेन्यू से आ जाए और टेबल सेलेक्ट करें। टेक्स्ट में वेयर इज टेबल, ये ठीक है। It has some options like we have a text default standard one. If you want to set your own, you can do it, but we normally go with the default one. You can increase the number of columns, you can increase the number of rows. Let's say number of columns 5 है, number of rows 6 है। रो कॉलम लेके इसको मैं 1 करता हूँ, लेट्स से दोनों को मैं इक्वल रखना चाहता हूँ। इट्स अप टू यू। कॉलम विड्थ, कॉलम रो हाइट। The first one is title, this one is title, this one is header, and the last one is for data. This we normally do it, ये preview में show कर रहे हैं। If you want to change it, title की बजाय आप क्या करें, you don't need a title, तो आप इसको header में कर लें, and you don't need 2 headers, तो इस header को आप क्या करें, second column को क्या करें, header क्या नाम है, data कर दें। If you don't need any header, आप इसको remove करें, सबको data कर लें। नहीं आपको हेडर टाइटल भी चाहिए, आपको हेडर भी चाहिए, और आपको ये भी चाहिए, यू कैन। इसको क्या करें, यहाँ पे आ जाए और कहीं पे क्लिक करें, आपका टेबल बन जाएगा। ठीक है, बस इस पे डबल क्लिक करें, यू कैन एडिट इट। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि फोर्स वर्सेस वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट में मैं कहता हूँ कि भाई ये है फोर्स, ये है मास, लेट्स से। ठीक है, मास टाइम, लेट्स से फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज डालता हूँ। जिस कॉलम में भी आप आते हैं, लेट्स से 20
3 10 6 जो भी वैल्यू आप देते हो उसी तरह ये अपडेट होता जाए जस्ट लाइक अ टेबल। ठीक है, और साइड पे क्लिक करें आपका टेबल इस तरह। इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी आप चेंज कर सकते हो टेबल के हवाले से। ठीक है, टेबल इस पर ये है कि आप यहाँ पे आ जाएं, स्पेसिफाई और विंडो, उस विंडो में भी ड्रा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक्सर्शन पॉइंट, यहाँ पे अगर आप आ जाए इस स्टाइल में मॉडिफाई में आ जाए तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि जनरल टेक्स्ट के हवाले से। ठीक है, मतलब इस टेबल को फिल करना चाहते हो डाटा के हवाले से। ठीक है, यू वांट टू फिल इट, नो फिल भी कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो, मिडल में रखना चाहते हो मिडल सेंटर में रखना, आपका सारा टेक्स्ट मिडल सेंटर में आएगा जो कि नॉर्मली टेबल के साथ हम करते हैं। मार्जिन आप इंक्रीज कर सकते हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मार्जिन आप इंक्रीज कर सकते हो। टेक्स्ट के हवाले से टेक्स्ट का इंडिविजुअल स्टाइल, ठीक है, एनोटेटिव रखना चाहते हो, स्टैंडर्ड रखना चाहते हो, या यहाँ से कुछ टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हो, कौन सा वाला आपको चाहिए, यू कैन सेलेक्ट इट, यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हो फॉर डेटा तो ये चेंज हो जाएगा। बॉर्डर लाइन के हवाले से आप चेंजेस करना चाहते हो। ठीक है, सेल टाइप, हेडर के लिए भी चेंजेस कर सकते हो, हेडर का कलर अलहदा सेलेक्ट के हेडर का कलर में रेड रखता हूँ। ठीक है, और सॉरी बॉर्डर नहीं, उसका टेक्स्ट का कलर मैं रेड रखता हूँ, आप यू कैन सी इसका कलर रेड हो गया। सिमिलरली आप जो है यहाँ से डाटा के लिए अलहदा से चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसका टेक्स्ट कलर लेट से मैं ब्लू रखता हूँ और ओके करता हूँ, सेट करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, और जो करंट था उस पर भी क्या हो गया है, और एक मैंने यहाँ पे और अब मैं इसमें जो लिखूंगा उसका कलर डिफरेंट होगा, इसमें जो लिखूंगा उसका कलर डिफरेंट होगा, और इसमें जो लिखूंगा उसका कलर डिफरेंट होगा। इसी तरह आप लाइंस की भी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर या नहीं? इस तरह के आप टेबल्स, बाद अब हमें टेबल्स इंसर्ट करने पड़ते हैं कुछ वैल्यूज को शो करने के लिए या कुछ प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए, उसके लिए हमें क्या नाम है, टेबल्स इंसर्ट करना पड़ता है। इस तरह के टेबल्स हम बनाएंगे नहीं लाइन कमांड से हम या रेक्टेंगल कमांड से, हम इसको डायरेक्टली ही इंसर्ट करेंगे। कुछ आइडिया हो रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? एनीबॉडी? शाबाश। कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। नो सर क्लियर है सर। ये ठीक है सर ये टेबल की थिकनेस, लाइंस की थिकनेस हम कर सकते हैं यस, यू ज़्यादा? कैन डू इट, उसमें ऑप्शन है ना लाइन थिकनेस का था ना। ठीक है, वो ज़रा ट्राई कर लेना। प्रॉपर्टीज में अगर आप आ जाए, ठीक है, मॉडिफाई में आ जाए, मॉडिफाई में अगर आप देख लिए यहाँ पे है बॉर्डर, बॉर्डर का लाइन वेट जो है वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज फॉर द टाइटल, अगर आप इसको उसके लिए कर दें डाटा के लिए और इसको भी चेंज कर लें, यू विल बी एबल टू सी इट। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स को कर दें, यू कैन सी इट इज अप्लाइड। देख रहे हो बॉर्डर्स का वेट बढ़ गया है। यस सर। जब क्लिक करते हो बढ़ जाता है। You can see it right now. पहले विजिबल नहीं था ना क्योंकि लाइट वेट हमने ऑफ किया था, अब विजिबल है, हमने डेटा के लिए ओनली किया था, दैट्स व्हाई इट इज इंक्रीज फॉर डेटा। इस तरह के टेबल्स आप इंसर्ट कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट कमांड है जिसको हम कहते हैं रीजन और बाउंड्री। It has two functions, region or boundary. It is joining different entities to become single entity, one thing. It makes
those entities which it has जो close होते हैं ना, it has joined with each other and it is making those entities as a single entity. Second thing is it is making though that single entity as a boundary of the area surrounded. ठीक है, और ये हमें हेल्प करता है when we convert a 2D object into 3D. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. Let's say if you remember while using draw a polyline command, हमने इस तरह कहा था, हम जब एक ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं using a polyline command, so it is always a single entity. It is all by default a closed region. The line drawn is over here. The line drawn over here is a simple क्या नाम है, boundary of this area which is included by this line, which is surrounded by this boundary. This is the region inside and this is the boundary of this line. ठीक हो गया? अच्छा. If we draw such similar object with the help of a line, it will not be a single entity. अगर मैं इसी की तरह यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ड्रा करूँ, let's say not exactly similar to that one, but almost इसी तरह. But you can see this is not a single entity. This is a separate entity. This is a separate entity. Okay? I can move it, I can delete it, I can do anything with this. But if you want to convert these different single entities into a single region or a single object, or to make these all objects join these objects, and whether it is joined with line, polyline, जो भी lines की combination बने, but those are not, although it seems close object, but it is not connected with each other. So if you want to make it connected, for that purpose, what we do, we use boundary or region command. So we are doing the same thing by two methods. One is called boundary, the other is called region. In boundary, we select inner point of the boundary. If this is our boundary, we select inner point of this boundary, and this point, if I'm selecting this point, where is my crosshair, it will be looking for its nearest lines, that where is my boundary. When it locate it, it will join them and will make it as a single entity. But if you want to do the same thing with the region command, in region command, we do not select any point inside from inside area. We select the object to make it boundary of that region. Okay? Periphery of that region, to make it periphery of that region, we select object, not point. Just do it over here. Boundary, PO is a shortcut key for boundary. It is asking me select a pick point. When I click on this, so when I click inside, just observe this. It is looking for its boundaries. By default, it is looking for it automatically. When you say, okay, this is the point, so it has been converted to a single entity, just like the polyline. But if I want to do this thing with the region command, I have undone the boundary. If I want to do it with the region, similar thing will be done, but in this region command, it is asking us select objects to make boundaries. तो मैं क्या करूंगा, इन सब ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूंगा, तब ये इसको एज अ सिंगल एंटिटी बनाएगा. वन रीजन क्रिएटेड. देखें, यही काम हो गया जो हम कर रहे थे, बट डिफरेंस ये है कि वन इज बाउंड्री, द अदर इज रीजन. और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, वो मैं आपको बताता हूँ. लेट्स सी, मैंने दोबारा इसको अनडू किए रीजन को, एंड आई वांट टू ड्रॉ अ सर्कल इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट. यार यूसीएस को मैं मूव करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि क्लियर हो. अच्छा,
let's see, I have an object over here. Now what is the difference between region and boundary? Just look at this thing. Boundary. Again, it is asking me select a pick point. Okay. Now I have option. If I want to select, make this object, this circle as a boundary of my region. Matlab, if I want to select the area surrounded by this circle, I will click inside the circle, and it will only consider the circle surrounding this point, and it will take it as its boundaries. It is not selecting the other object. But if I pick a point from this region, what it will do, it will look for two boundaries. One its outer boundary, the other its inner boundary. It will exclude this portion from its selected region. It will not include this portion of the circle, because this circle is now is considered as a boundary for this point which I have selected in this region. But if I do this thing with the help of region command, it will be not giving me any option. It will be selecting the objects. ठीक है, ये select करता हूँ, enter करता हूँ. It is not looking into the inner object. It is just looking to the boundaries of where उसको करता है, उसको एक closed region बनाता है. Let me do it in the क्या नाम है, एक अदर कमांड है जिसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या नाम है, एक दूसरा कमांड में यहाँ पे करता हूँ, उसको हम कहते हैं हैच एंड ग्रेडियंट. उसमें ये रीजन और बाउंड्री बहुत क्लियर आपको समझ आ जाएगी. बट यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझ आनी चाहिए कि व्हाट वी वांट टू डू यूजिंग हैच एंड यूजिंग बाउंड्री एंड रीजन कमांड. ओके, let's talk about the H and region का क्या नाम है, ग्रेडियंट कमांड. उस पर ये चीज और भी क्लियर हो जाएगा. अगर हम हैच कमांड में चले जाए, हैच का क्या मतलब है, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर दैट वी आर शोइंग बेसिकली द इंटरनल क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. हैच पैटर्न से हम वो शो करते हैं. ठीक है, अगर मैं हैच कमांड पे आ जाऊं तो इट इज H is the shortcut key for हैच. It is asking me select a pick point, select objects are pick point, internal points. You can see. So when it says select objects, it is asking to define your object which is surrounding a particular area. Or pick point से ये मतलब है कि select any inner point from that object, which is basically boundary command. और इसमें सेटिंग है, तो फॉर सेटिंग आई विल प्रेस T. What does the hatch do? It is basically giving a cross section, showing the cross section of a material. आप यहाँ से अपना भी डिफाइन कर सकते हो. प्री डिफाइन है, इसमें ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के हैं. ठीक है, लाइंस है आपके पास, या आप यहाँ से आ जाए, सॉरी, आप जो स्टील के लिए अलग से हैच पैटर्न होगा, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं. ठीक है, क्ले के लिए फ्लेक्स, जिस मटेरियल से चीज बनाओ उसको क्रॉस सेक्शन से हम शो करते हैं. दिस इज द पर्टिकुलर मटेरियल. ठीक है, स्ट्रिंग्स है, फैंस है, ट्रॉन्स है, प्लास्टिक के लिए. ठीक है, हनीकम शेप के लिए, हेक्सागोनल के लिए, इस तरह के हम सेलेक्ट करते हैं. लेट्स से आवर मटेरियल इज, दिस ऑब्जेक्ट इज मेड, द इनर ऑब्जेक्ट इज द रॉड व्हिच इज मेड ऑफ स्टील. इसको हमें ऐसा करना है. अब इसको सेलेक्ट करने के लिए, वी हैव टू ऑप्शंस फॉर बाउंड्री सिलेक्शन, वेदर वी आर यूजिंग पिक पॉइंट और वी आर यूजिंग द सेलेक्ट ऑब्जेक्ट. इस पे फर्क देखें. मैं पिक पॉइंट लेता हूं और मैं इधर क्लिक करता हूं. यू कैन सी इट इज एक्सक्लूडिंग द सर्कल. पिक पॉइंट में अगर मैं यहाँ पे कर लूं, इट इज एक्सक्लूडिंग बोथ द रेक्टेंगल एंड द सर्कल. लेकिन अगर मैं रेक्टेंगल और सर्कल का इनर रीजन कर लूं तो ये सबको एक्सक्लूड करे. जहां पे क्लिक कर रहे हो, इट इज टेकिंग द आउटर एंड द इनर बाउंड्री बाय इटसेल्फ. अगर मैं सिर्फ सर्कल के अंदर कर लूं, इट इज नॉट गोइंग आउट. दिस इज ड्यू टू द पिक पॉइंट. और हम पिक पॉइंट को करें, अगर मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूं एस, नाउ यू विल सी, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं ना, इट विल बी नॉट लुकिंग इनटू द सर्कल, इट विल बी इंक्लूडिंग द सर्कल, और उसको इग्नोर करता है. बिकॉज यू आर नॉट टेलिंग कि
पॉइंट सेलेक्ट करो और रीजन डिफाइन करो। यू आर सेलेक्टिंग द बाउंड्री और कहते हो कि इस बाउंड्री जो आपका बाहर बना हुआ है, ये पेरिफेरी बना हुआ है, इसके अंदर जो जगह है उसको क्या करो, एज अ रीजन बनाओ और इसको हैच करो। यहां पे अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें, ये इसको कर देगा। अगर आप कहते कि ओके एंटर करें, हो जाए। यू कैन सी एक लाइन से हो, लेकिन दीज आर नॉट वेरी कंजस्टेड विजिबल नहीं। तो हम क्या करते हैं, हैच में दोबारा जाते हैं, सेटिंग में जाकर उसमें ये स्केल जो है वो बढ़ा देते हैं। वी हैव स्केल और है, इसको लेट से मैं 10 करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, इस पर डबल क्लिक करके भी इसका स्केल चेंज कर सकते हो। देखिए इट्स नॉट 10, इट्स टू 10, मेक इट 10, ये और क्लियर आ गया। फिर स्टिल नॉट क्लियर, ठीक है, डबल क्लिक करें, इसको 10 की वजह स्केल को क्या करो 30 कर दो, अब और दोबारा क्लिक कर दो। चलिए जी 30 से भी नहीं होता, इसको 50 कर दो। आई होप इट विल बी मोर क्लियर। ठीक है, सो हम स्केल इसका चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज इट्स प्रॉपर्टीज और इससे हमें क्लियर नजर आ जाता है कि इट्स मैडम। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको एज अ इस बॉडी को सेलेक्ट किया तो इसके इंक्लूडेड एरिया को लिया था, बट यहाँ पे मैंने इस पे से एक पॉइंट लिया हुआ। अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ ना तो इसका फायदा है, लेट्स से आई वांट टू मेक सेलेक्ट ओनली दिस पोर्शन, तो उसके लिए मुझे मजबूरन क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू गो टू द हैच कमांड, उसमें सेटिंग में जाऊंगा और सेटिंग में मैं क्या करूंगा, आई विल नॉट यूज द पिक द सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँ, इसको सेलेक्ट करूँ इसके लिए, तो इसको भी चेंज करेगा, इसमें मुझे मजबूरन पिक पॉइंट चेंज यूज करना पड़ेगा, पिक पॉइंट। ख्याल में आपको ये चीज समझ आ रही है वो टाइम से, ठीक है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, पिक पॉइंट आगे, ठीक है। सो वी आर शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ material internal structure using different types of lines। इसमें एक और ऑप्शन भी होता है हैच के साथ, जिसको हम सेटिंग में देख सकते, ग्रेडियंट होता है, इसमें आप कलर देते हैं, सिंगल कलर देते हो, उसमें शेड नहीं रखना चाहते टेंटेड, ठीक है। इसको अगर मैं कर लूँ, पिक पॉइंट ले लूँ, इसको सेलेक्ट कर दो, इसको ये कलर देता है। समटाइम वी शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, with color hatching, with color gradient, मतलब दो तीन किस्म के कलर शो करते हैं और उस कलर को नेम देते हैं कि दिस इज स्टील, दिस इज ब्रास, दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज प्लास्टिक, बट वी हैव टू डिफाइन लीजेंड्स। हम यहाँ पे एक बॉक्स डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, टेबल डिफाइन कर लेते हैं और टेबल में हम कह रहे थे कि कलर देते हैं और लिखते हैं कि ब्लू इज स्टील, येलो इज वोल्ट, इस तरह का हमें डिफाइन करना होगा, अदरवाइज जो रीडर है उसको नहीं पता चलेगा कि ये मटेरियल कलर जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया, तो हम हैचिंग भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूज, लेकिन उसमें ये चीज जहन में रखिए कि व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट, so it is selecting all the objects included all the area, it is not looking into the objects inside just like we did over here, but you are when you are selecting pick point, तो उस केस में आप एक्सक्लूड करते हो बाकी को, जो आपका रीजन होते हैं उसको वो लेता है। दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, स्टिल अगर कोई मसला है आप लोग पूछ सकते हैं। जी जनाब, क्लियर है सर। एनीबॉडी द प्रॉब्लम कैन आस्क। No, sir. क्लियर है सर। Okay, with this we have finished our draw toolbar और draw command। उसमें दो चीजें सिर्फ रहती हैं, ब्लॉक एंड इंसर्ट ब्लॉक, उसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये मॉडिफाइड टूलबार फुल कवर करेंगे, क्योंकि वो इतना मुश्किल नहीं है, उसमें से हमें जो है रे को समझना है, रे क्या चीज़ है, बाकी हम इंशाल्लाह क्लास में कर सकते हैं। और विद दिस आई विल बी गिविंग यू another task or assignment 2 आपको ऑलरेडी मिल चुका है, आई विल गिविंग यू टास्क 2, ठीक है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा और वो भी आप साथ साथ में करते जाएं। Still you have problem in any command, आप लोग मुझसे बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट क्लास पूछ सकते हैं।
सर एक क्वेश्चन है। जी सर ये जो आप अभी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ऑटो कैड का, ये 2017 वर्जन है। ठीक है। और सर हम ये लेटेस्ट वर्जन है, मतलब इसके जो ये काफी एडवांस है। और हम जब वो पेपर देते हैं लाइक यूनिवर्सिटी में, जो हमारा वाइवा होता है वो कंप्यूटर में होता है, यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर में, उसमें 2007 का यूज होता है। तो सर इन दोनों में काफी डिफरेंस है, तो जिसकी वजह से सर हम फिर समझ नहीं आ रही हम कौन सा वाला यूज करें, क्योंकि वो तो काफी पुराना वर्जन है, काफी मुश्किल भी है। आप पहले क्लास में थे, हु इज दिस गाय? हयानुर रहमान। यस सर। आप पहले क्लास में थे? यस सर मैं था। आप रेगुलर स्टूडेंट है कि नहीं, री-रजिस्टर्ड है? नहीं सर, रेगुलर स्टूडेंट हूँ। अयान साहब, मैंने, अगर आपने देखा था, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू सॉफ्टवेयर। मैं यही काम आपके सामने अभी जो है उसमें भी करता हूँ, कैट 7 में करता हूँ। बेसिक कमांड जो हम पढ़ ले, दोज आर सिमिलर। जो एडवांस ऑप्शंस है, इसमें ऐसी ऑप्शंस नहीं है जो कि 7 में नहीं है, लेकिन जी इसमें सर। ऐसी ऑप्शन है, ठीक है, जी थोड़े से एडवांस ऑप्शंस इसमें है जो कि 7 में अवेलेबल नहीं है, बट 7 के सारे कमांड्स इसमें अवेलेबल है। इसका ये मतलब है कि व्हेन यू आर लर्निंग दिस वन, यू आर बाय डिफॉल्ट लर्निंग द 7। ठीक है। ओके दूसरी सर। बात ये है कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, मैं बार बार हर एक चीज को बताता रहता हूँ कि दिस इज लाइन, लाइन कमांड, लाइन के लिए एल है। आप एंगुलर डायमेंशन ऐसे चेंज करें, जो है एक्स एक्सिस से क्यू मेजर कर रहे हैं, यूनिट्स कैसे चेंज कर रहे हैं, आप सर्कल कैसे ड्रा करेंगे, ऑल दीज मेथड्स आर प्रेजेंट इन द कैट 7। जी सर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। ये तो मैंने बहुत पहले क्लास में बताया था कि इसमें कंफ्यूज ना हो कि आई एम यूजिंग 17 7। मेरे पास 7 भी इंस्टॉल है, आई हैव नो प्रॉब्लम इन यूजिंग 7। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये लेटेस्ट में जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो भी सीख लें, और जो बेसिक्स है वो भी सीख लें। तो जी सर बेसिक्स सही है। ऑलरेडी इसमें कवर हो रही है। ठीक है, लाइन ड्रा का नहीं है। अगर आप यहाँ, मैं 7 ओपन कर लूँ ना, मैं 2007 ओपन कर लूँ, यू विल सी। यही काम मैं उधर ही कर लेता हूँ, ये काम। ठीक है, ये देखिए ये 2007 है। ठीक है, जी सर। मैं इसमें लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ, रेक्टेंगल। देखिए वही चीज है, रेक्टेंगल है, एरिया है, डायमेंशन है, रोटेशन है, और कोई चीज इसमें डिफरेंट नहीं है ना, यानी डिफरेंट है। देखिए इसमें सर्कल है 3-4 मीटर से, अगर मैं इसको हैच करना चाहूँ, एच अगेन यूज कर रहा हूँ, वही चीज ओपन हो रहा है। ठीक है, प्री डिफाइंड है, वही कुछ शायद उसमें एडवांस्ड हो, लेकिन ये चीजें भी है उसमें। ये करना चाहता हूँ, पिक पॉइंट करना चाहता हूँ, ये सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, प्रीव्यू में देख सकता हूँ। दैट्स इट। मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है प्रीव्यू में, मैं इसको क्या करता हूँ, स्केल इसको 4 करता हूँ, फिर प्रीव्यू में देखता हूँ एक्सेप्टेबल है, ओके कर, बिल्कुल ऐसी हैच। लेकिन सही है इसमें सर। ये यहाँ पे डायरेक्ट विंडो ओपन हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है, पेज के साथ हमने सेटिंग्स में जाके टी प्रेस करना होगा, वही चीज होगा। इसमें भी प्रीव्यू है। कुछ समझ आ रही है कि नहीं, अभी भी मसला यस है? सर। सही है सर, सही है। इसमें जी सर। कंफ्यूज ना हो, इसमें कंफ्यूज ना हो। चाहे ये तो फायदा है कि आप लेट से आपने कैट सीखी एंड यू आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री, और आपको जी सर। बताया जाता है कि भाई कैट 17, कैट 2020 हमारे पास है, उस पर काम करो, यू मस्ट बी एबल टू डू, कमांड सेम है। ठीक है, सही है सर, थैंक यू। तो मैं एडवांस चीजों को डिस्कस ही नहीं कर रहा, मैं बेसिक चीजों को कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि इट इज जस्ट लाइक कैलकुलेटर, कि आप कैलकुलेशन सीख लेते 2+2, और वही 2+2 आप नॉर्मल कैलकुलेटर से भी कर सकते हो और साइंटिफिक से भी कर सकते हो। अब जब साइंटिफिक से करोगे उसमें कुछ ऐसी फीचर्स होंगे जो कि नॉर्मल कैलकुलेटर में नहीं होंगी, बट काम दोनों सेम, बेसिक काम दोनों सेम करेंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। ओके। जी सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। सर ये जो आपने टास्क 1 दिया है सर, ये जो हम ड्राइंग कर लेंगे तो ये फिर गूगल क्लासरूम में कैसे अपलोड करेंगे?
देखिए मैंने वेरी क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी क्लास में, अगर आप लोग देख लेना अपनी क्लास से, तो मैंने क्लियरली यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है इन चीज़ों को कि क्या करना है आप लोगों ने। आपने जो है पीडीएफ फाइल भी जनरेट करनी है और वर्ड फाइल, वो मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में कि पीडीएफ कैसे जनरेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है क्लियरली, इसमें मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। शायद असाइनमेंट हो, चाहे टास्क हो, चाहे क्विज हो, आपने पहले ड्राइंग फाइल बनानी है। अगर लेट से मैंने टास्क 1 दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, मैंने लैब टास्क 1 दिया हुआ है ये वाला। इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स है? 1 2 3। तो जब आप इस फाइल को सेव करोगे तो आप किस तरह सेव करोगे वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई आप कैसे करोगे। आप इसको ऐसे करोगे कि आप 3 ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, तो क्या करोगे, आप अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो सेक्शन आपका है, फिर आगे लिखोगे असाइनमेंट है तो असाइनमेंट, टास्क है टास्क, लेट्स से टास्क 1 है तो आप लिखेंगे आप रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेक्शन, और फिर लिखेंगे टास्क 1 ए। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको ए नेम दोगे, जो 2 है दूसरे उसको बी दोगे, जो तीसरे उसको ठीक है उसको सी दोगे, और इस तरह आप नेम देते जाओगे। उस कैट फाइल को भी आप सेव करोगे, ये एक कैट फाइल है, ठीक है। इसको आप कैसे सेव करोगे, यहाँ पे आके आप क्या करोगे, सॉरी सर जी, जिप फाइल हमने अपलोड किया है सर, जिप सही है, जिप में देखिए कन्वर्ट। अगर उसमें दोनों कैट फाइल भी होनी चाहिए और पीडीएफ भी होनी चाहिए, फिर सबको कॉपी करके फोल्डर में डालो और वो जिप फाइल करके सीआर को या यहाँ पे अपलोड कर दो, बस कैसा खत्म। यस सर, सर वो फोल्डर अपलोड नहीं हो रहा था तो इसलिए जिप जिप फाइल फाइल अपलोड अच्छी किया है ना, सर। लेकिन जिप ऐसा हो कि उस पे ऐसा ना हो कि आपने वो लगाया हो, नहीं क्या सर, नाम है, पासवर्ड वगैरह लगाया हो, मैं ओपन नहीं कर सकूँ। ठीक है, नहीं नॉर्मल जिप फाइल अपलोड किया करो, वो मैं ओपन करके उसको कर सकूँ। सर वो जिप फाइल तो इधर ओपन नहीं होता सर, वो कहते हैं कि सब्सक्रिप्शन हैज एक्सपायर्ड सर, वो विनरार। तो आप अपना वेंडर चेंज करें भाई डियर, वो मसला होगा। ठीक है, मुझे 11 यहाँ पे है ना, और लेट से किसी का मैं, किसी ने जिप फाइल ओपन कर, ये देखिए वेंडर, सर मेरा वाला ओपन करें सर। आपका वेंडर में मसला होगा। सर आप ओपन करें, आपको दिखा रहा है कि नहीं सर, मैं यही पूछ रहा क्या नाम है आपका? हूँ। जरा खान सर, यही वाला सर। यही है, बिल्कुल आ रहा है। सही है, आपका वेंडर में मसला है, या फिर कैट सही है फाइल सर। आ गए, ये आपका वो वाला। अब देखिए ना, आपने गलत किए हैं, ड्राइंग 1 नहीं देनी है, इसको मैं एक्सेप्ट यस सर। करूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँ। देखे ना, इस तरह सेव करें, टास्क 1 ए, इसको ड्राइंग 1 को टास्क 1 ए दे दे, ड्राइंग 2 को यस टास्क 1 2, इस तरह का नाम दे तो बेहतर होगा, इससे यस पता सर। चलेगा ना कि ये चीज़ है। सॉरी ये 7 में कर रहा है, सॉरी 7 ओपन कर, इसलिए नहीं कर रहा। आ गया ये आपका ड्राइंग, सही है? सही है सर। जी, कोई और क्वेश्चन है कि नहीं, हिस्सा खत्म? सर क्वेश्चन है सर। जी पूछिए। सर जब हम सर ये मिसाल के तौर पर हम रेक्टेंगल ऐसे ड्रा करते हैं तो उसकी
कॉर्नर थोड़ा पॉइंट्स लाउड होते बोले, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही। हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि सर जब हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो उसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना सर, हम उन पॉइंट्स को ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे ड्रा कर सकते हैं नहीं, मतलब ये जो पॉइंट है ये 2 बाई 2 है। नहीं, 4 पॉइंट्स होते, 4 कॉर्नर्स होते हैं ना रेक्टेंगल के, तो फिर आप क्या करना चाह रहे हैं? सर एक कॉर्नर को मैं पॉइंट देना चाहता हूँ कि यार ये जो है ना 2 बाई 2 है या वो आप कर सकते हैं, वो हम लाइन कमांड से फिर करेंगे, रेक्टेंगल कमांड से नहीं करेंगे। अच्छा हमने लाइन कमांड मतलब से सब ना ऑलरेडी किया है ना, हम लाइन कमांड से। सर वो तो ठीक है लेकिन हम वो मतलब उस पॉइंट को शो कर सकते हैं कि ये 2 बाई 2 पॉइंट है। देखिए उसको हम ऑर्डर पेयर से शो करें, हम डायमेंशंस पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हम एक्स ऑर्डिनेट वाई ऑर्डिनेट शो कर सकते हैं। एक्स ऑर्डिनेट वाई ऑर्डिनेट, एक्स उसका जो एक्स वैल्यू उसका वाई वैल्यू हम शो कर सकते हैं। सर वो कैसे सर? वो हम डायमेंशंस में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जब हम डायमेंशंस पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप डायमेंशंस में आ जाए ना, देयर इज एन ऑप्शन एक्स ऑर्डिनेट वाई ऑर्डिनेट, वेयर इट इज, तो ये ऑर्डिनेट नहीं है यहाँ से, लेकिन मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, इसको यहाँ पे लेके आता तो ये क्या करता है, इधर लेके आता ये वाई ऑर्डिनेट बताता है, इधर लेके आता ये एक्स बताता है। लेट मी शो यू, ये वाई वैल्यू बताता है क्योंकि ये मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इस कॉर्नर की वे वाई वैल्यू क्या है, ये बताता है कि 96.32 वाई वैल्यू है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ ना, ये विल सी इट इज 96 है ना ये वाई वैल्यू। आपने क्रॉस शेयर की वैल्यू देखी है नीचे? यस सर वो माइनस यस सर। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि हम इसको शो कैसे करेंगे, उसके लिए फिर हम तरीका यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक सर। लेकिन नॉर्मली कैड में हम इसको लिखते हैं, ऑर्डर पेयर्स हम लिखते हैं, मैनुअली लिखते हैं हम इसको। हाँ यस सर। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें लेट से, मैं सिंपल सी बात है, मैं जो इस कॉर्नर के जिस पे मैं क्रॉस शेयर लेके आता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको कहते हैं 23, 27 है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 23, 7 टेक्स्ट है। इस कॉर्नर की में ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये है 23, 27। ये सिंपलेस्ट मेथड, बस आप ये कर लें। साइज बहुत कम है, ठीक है, आप इसका साइज बढ़ा सकते हो, हाइट वो हम एडजस्ट कर लेंगे तो इतना मसला नहीं होगा हमें। ओके सर। जब आप ये मॉडिफाई कमांड्स वगैरह पढ़ लेंगे ना, उसमें वो कुछ चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ओके सर। ठीक हो गया जनाब, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट एडिटर यहाँ से आप देखें, टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, इसके आप टेक्स्ट हाइट जो है इसको लेट से मैं 2 करता हूँ, टू बी मोर क्लियर टू यू विल सी इट नाउ। इस पर जब आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ से आप टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 कर दो। डूइंग चेंजिंग, ये चेंज हो सकता है, टेक्स्ट एडिटर में ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। टेक्स्ट एडिटर क्लिक कर लो इस पे, और समझ आ गया, तो इस तरह हम लिखते हैं, हम बनाते नहीं है इसको, डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू राइट इट। ओके सर। फिर वो बुलेट्स वगैरह सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। टेक्सटाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जनाब, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन तो हम क्लास फिनिश कर सकते हैं।
अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट करते जाए नीचे, उसमें लिख के प्रेजेंट नहीं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लें और फिर जो है खत्म करें। चैट में रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बिलाल अपना पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा करो, सिर्फ 4 डिजिट नहीं, इसमें री रजिस्टर्ड भी है। हेलो, आवाज आ रही है यार? दूसरी क्लास किस टाइम है अभी? 11 बजे। अच्छा 11 बजे किस चीज की क्लास है यार? ये डेट शीट ये कोई सेंड कर दो प्लीज यार, इसका जो वाली